हेलो मैं फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब। मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि तेलंगाना पुलिस ने रिलीज़ करी है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है। डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? तो अभी हम है तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TPRB। इस पे आप विजिट कर सकते हो। जैसे आप विजिट करोगे, जैसा भी आपको स्क्रीन में इंटरफेस दिख रहा है, ऐसे ही एक इंटरफेस ओपन होगा आपके स्क्रीन में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है FSL टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025। तो ये ओपन पोस्ट है। 14 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जैसे आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, एक PDF ओपन हो जाएगा। मैंने दूसरे टैब में ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सिंपली उसको क्लिक करने पे ही ये PDF ओपन हो जाएगी। एंड अगर आप फ़ोन में खोल रहे हो ये, तो डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो इस नोटिफिकेशन को, ये वाले पॉइंट से। सो उसके बाद फिर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इतना स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ बच्चों। वहाँ पे मैंने इसकी PDF शेयर करी हुई है, तो वहाँ से आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी दीक्षास लर्निंग लैब है, तो वहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट आपको बताई जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट, तो ये स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट हो रही है। एंड सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, और दूसरे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो DGP ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ये एड्रेस है हैदराबाद। जो डेट है 14 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। बच्चों, वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में फिल हो रही है। तो किसी भी तरीके का कोई भी ऑफलाइन पेपर वर्क आपको नहीं करना है, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी इसी ही PDF में आगे अटैच है। उसी ही फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे? www.tgprb.in पे। फ्रॉम 8 AM to 27th November 2025 onwards till 5 PM of 15th December 2025। मतलब अभी एप्लीकेशन नहीं कर सकते आप, 27th नवंबर से अप्लाई कर पाओगे। आज की डेट है बच्चों 16th नवंबर। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज 27th नवंबर 2025 मॉर्निंग 8 o'clock से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट रहेगा बच्चों ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब अगर हम आज की डेट से देखें तो एक मंथ, वरना एक मंथ में एक आध वीक कम है, ठीक है। सो इट्स 15th December 2025, दिस विल बी द लास्ट डेट, ठीक है। फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिक्रूटमेंट है। डिटेल्ड वैकेंसी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल के थ्रू आपको ये सारी की सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सो पोस्ट नंबर 51, ठीक है। पोस्ट कोड 51, नंबर नहीं बोलना चाहिए मुझे। सो सीरियल नंबर 1, पोस्ट कोड है 51। साइंटिफिक ऑफिसर डिवीजन फिजिक्स एंड जनरल फोरेंसिक साइंस, दो वैकेंसीज है, ठीक है। कोड जो है 52, पोस्ट कोड 52 साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल, पोस्ट है 3। साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी डिवीजन 53, पोस्ट कोड है, 3 वैकेंसीज है। साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर, टोटल 2 वैकेंसीज है। साइंटिफिक असिस्टेंट, अब देखो साइंटिफिक ऑफिसर से साइंटिफिक असिस्टेंट पे हम आ गए हैं। तो जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए सैलरी होगी 45,960 से लेके 1,24,150 रुपीज, ठीक है। ये आपका सैलरी रेंज होगा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब हम आ गए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिकल एंड जनरल फोरेंसिक्स 5 वैकेंसीज है।
साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल डिवीजन, अगेन जो पोस्ट कोड है इट इज 55 56 रिस्पेक्टिवली। टोटल 10 पोस्ट है। 57 पोस्ट कोड है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी के लिए, इसमें भी 10 पोस्ट है। इसके अलावा देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर्स, पोस्ट कोड 58। सो 7 पोस्ट अवेलेबल है, और इस पोस्ट के लिए जो सैलरी रेंज करेगी, ये रेंज करेगी 42,300 से लेके 1,15,270 रुपीज़ का सैलरी रेंज। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर आप एलिजिबल हो। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको कौन सा एग्जाम देना है, किस तरीके का एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सब कुछ इस पीडीएफ में मेंशन है जो कि हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट इज 59 laboratory technician physics, physical and general, laboratory technician chemical, laboratory technician biology serology, lab technician computers and lab attendant, post code 60 61 62 63। ये सारे के सारे पोस्ट कोड हैं। Here we have number of vacancies 2 6 4 5 and 1 respectively। जो सैलरी रेंज करेगी इट विल रेंज फ्रॉम 24,280 to 72,850 रुपीज, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इफ यू आर एलिजिबल डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म एंड प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट रियली वेरी सीरियसली, बिकॉज यू कैन गेट द जॉब in Telangana Police Department Forensic Science Laboratory। this could be your dream job, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो फोरेंसिक साइंस के फील्ड में होते हैं, एंड अगर वो लैब में जॉब करना चाहते हैं या फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो इस तरीके की वैकेंसीज आर द आइडियल वैकेंसीज। अगेन अगर एलिजिबल रहोगे तो ज़रूर से अप्लाई करना, ठीक है। What next, क्या important है, ठीक है। Only important points we will discuss from the notification। So eligibility हमें check करना, of course here it is written candidates have to check the eligibility before applying। if you are eligible then only apply, because you have application fee as well, ठीक है। So we have different application fee for Telangana people and other state people। So according to your state and where you belong, you can fill the form and pay the fee, ठीक है। Here we have distribution of vacancies community wise, you can go through it, how many vacancies are distributed in multiple categories। post and reservation वाला sheet है ये reservation वाला sheet है, तो ये इसको go through कर लेना एक बार, ये ठीक है। Next is general instructions which could be important, जैसे कि candidates are required to go through the notification, of course, um, check the eligibility and then fill the application form. If they are eligible, it should be online only. Application receives online shall only be considered, and the Telangana State Level Police Recruitment Board will not held any will not be responsible for any kind of discrepancy, of course। जो तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी inconsistencies or errors in the application submitted online। Candidates are advised to strictly follow the instructions in their own interest and to verify the contents before submitting application online। If you have any issue with the application form, you have to fix it। जो recruitment board है, it will not be responsible for any mistakes and discrepancy, ठीक है। Particulars furnished by the candidates in the online application form will be taken as final। Candidates should therefore be very careful in uploading and submitting online application form। If you have already submitted the application form, there is no going back to application form submit करने से पहले double check all the details and things you are uploading and mentioning in your application form, ठीक है। What next? Non-relevant column of the online application form should be left blank, okay। Incomplete, incorrect online application form will be rejected, very obvious। Information, if any, furnished by the candidate subsequently in any form will not be entertained by the recruitment board। एंड बेसिकली आपको बिल्कुल सही सही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो गई तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितनी भी आप रिक्वेस्ट कर लोगे, देयर विल बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। दे विल नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, what I can understand with this, ठीक है। Candidate should not furnish any particulars that are false, of course। गलत information नहीं देनी है, false information नहीं fill करनी है, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं लगाने हैं, which is
रियली वेरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट डाल दिया तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा एंड देन आप इस रिक्रूटमेंट से निकाल दिए जाओगे, यू विल बी रिमूव्ड। ठीक है? All the testimonials issued by the competent authorities shall compulsory be produced as when required. If the candidate fails to produce the same, his and her candidature will be rejected and disqualified without any further correspondence. Yes, अगर आपने कुछ claim करा that you have some डिग्री और सर्टिफिकेट, जब आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करने को बोला गया एंड देन यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट, तो आपका जो कैंडिडेचर है और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जस्ट कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन चेक कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, बट वो मिसप्लेस हो जाते हैं एंड फिर एट द टाइम ऑफ सबमिशन वो आपको नहीं मिलते हैं। सो पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, कंपाइल कर लो, चेक कर लो व्हाट यू हैव एंड देन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? Next important point is the claim of candidates with regard of the age, date of birth, educational qualification, community, etc. are accepted only provisionally on the information furnished by them online. बाद में आपको certificates produce करने होंगे if the candidates who are underaged or overaged applying for the recruitment, उनका candidature reject कर दिया जाएगा. As candidature for the recruitment is processed through computer and electronic devices, which is based on particulars furnished in the online application form, the candidates are advised to fill in all the relevant particulars carefully. Again, सारी चीजें आपको carefully भरनी है. Whole soul इस पूरे के पूरे नोट का यही meaning है that you have to fill the application form really very carefully. बाद में आप उसे recorrect नहीं कर सकते, तो fill the correct information at the first place. Okay, so application form fee कितनी है? So if you are ST and SC local from the state of Telangana, then you have to fill the application form with 1,000 rupees if you are applying for scientific officer's post. If you are applying for scientific assistant, then you have to pay 1,000 rupees. Then a laboratory technician 600 rupees and laboratory attendant 500 rupees. Okay, and all the other candidates, they have to pay the fee of 2,000 rupees for scientific officer, 2,000 rupees for scientific assistant, 1,200 rupees for laboratory technician, and laboratory attendant 1,000 rupees. Okay? If you are any other person or non-reserve candidate or comes from OBC and other states ST, SC candidate, then you'll not be able to get this relaxation. It is only for ST and SC candidates from Telangana. ठीक है, ऑनलाइन आपको फी पे करनी है. हियर आर द स्टेप्स हाउ यू कैन पे द फी आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, which is really very simple. It is as simple as if you are placing any order online for Amazon or Myntra or Ajio or any other online shopping platform, वैसे ही आपको यहाँ पे भी फॉर्म फी पे करनी है एंड वो एक्सेप्ट हो जाएगी एंड देन योर फॉर्म विल बी सबमिटेड. Okay, we have few instructions for the online application. सबसे पहला, you have to fill your own phone number and you have to create your own user ID, of course. ठीक है? We have to select the post for which the person wants to apply as per the eligibility. Fee की information I have already shared just above. तो उसके according you have to pay the fee. Payment of fee using any mode is available. You can pay through credit card, debit card, UPI, etc. Um, Okay, continue on the website with the user ID and fill the application forms. First of all, you have to create your ID on TSL PRB, and then after creating your ID, you have to log in, then you have to fill the application form, all the particulars, you have to pay the fee. Scan and upload the copy of your passport photograph and specimen of signature as per the required shape and dimension. इसके अलावा you have to submit the application form along with the documents which is required. ठीक है? Here, देखो यहाँ पे just like this, you have to have your photo and signature below the photograph. Okay? Okay, you also have to give a declaration that you understand each and everything and you're applying for the XYZ post and you're the responsible person. One time password की help से you can confirm it. Okay, you have to upload these documents. These are the list of
document to be uploaded, secondary school or matriculation certificate or equivalent certificate to support the date of birth, educational qualification certificate that pertain to relevant post and eligibility. We have to see the paragraph number 11B of this notification for this educational qualification. Study certificates which is issued by the government school authorities, government recognized school authority from 1st to 7th class, and residence certificate issues by MRO. Next, latest community certificate issued by the competent authority of the government of Telangana, non-creamy layer certificate issued by the competent authority, which should on or after, which should be around 1st April 2025 in case of BC candidates. Certificate of economically weaker section category issued around 1st April 2025. All the candidates from superintendent government central hospital or district headquarter hospital in respect of orthopedically handicapped person, we have to see the annexure 5 work experience certificate if you have any work experience on central and state laboratory, state forensic science laboratory, and the similar post as contract outsourcing regular should be certified by the director of FSL or CFSL. NCC instructor certificate or any certificate in case of Telangana state government employee, PPO, discharge book, NOC in case of Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, any other territorial army and ex-serviceman category whenever application for claiming the age relaxation. Okay. Okay. Okay, next we have special reservation. So just go through the special reservation wala point. If you are a person who wants to go for the reservation, if you come from the category, you get the reservation, just go through it. All the reservation details are here. I will share this PDF. आप उसे download कर सकते हो simply and you can go through it. Okay, next important thing is eligibility conditions and age. Very important age limit. The person or candidate should be more than 18 years. This is the lower limit, and 34 years, this is the upper age limit. If you are 17 years old, not eligible. If you are 35 years old, not eligible. कब से calculate करी जाएगी? The age will be calculated from 1st July 2025. The date of birth which you have on your certificates usse calculate kari jayegi. A lot of people have different date and year on their certificate which is different to their real ones. So just go through your certificates and check what you have in your certificate and uske according aapko calculate karna hai. Age relaxation will be given to special candidates. Just go through it. Okay. Here we have category and people who can go for age relaxation. There are 5 years of age relaxation, 3 years, and of course, still 10 years. Okay, again, we have some age relaxation for women candidates as well for the post code 59, 60, 61, 62, and 63. So, women candidates from ST/SC candidates, 18 years to 40 years is the age limit. 18 is the lower age limit, and 40 years is upper age limit. Okay, just go through it for all the women candidates. Okay, now here are the important part. Now, next, this is really very important educational qualification. For the post code 51 scientific officer, physical in general, you need to have MSc in physics and forensic science as physics, one of the subject in their course. So 65% minimum aggregate marks hona chahiye university level pe, and any other equivalent certificate will also work. The candidates with post graduation in forensic science should have physics, general physics as one of the subjects in graduation level. Next post code is 52 scientific officer chemical. So MSc chemistry, MSc forensic science with minimum 65% of marks in their aggregate mark, और आपका chemistry, pure chemistry and toxicology as a subject होना चाहिए in your course in your graduation level. Next is scientific officer biology and serology, MSc people with biology or
genetics or zoology or botany, microbiology, biotechnology, biochemistry and psychology, MA, MSc in forensic science, and specialization to biology, serology, DNA with minimum 65% of marks. एंड अगर आपका एक सब्जेक्ट बीएससी फोरेंसिक साइंस अगर आपने करी है या एमएससी फोरेंसिक साइंस आपने करी है, तो आपके पूरे के पूरे कोर्स करिकुलम में यू नीड टू हैव दीज सब्जेक्ट्स. इट कुड बी बायोकेमिस्ट्री, biology, genetics, microbiology, serology, DNA, zoology, biochemistry, biotechnology, psychology, etc. Next is scientific officer computers. If you are MSc with computer science, MTech, EEE, ECE, cybersecurity, cyber forensics, CAC, IT, MCA or MSc forensic science with computer or cybersecurity, minimum eligibility है 65% aggregate. और आपके graduation में if you are a MSc forensic science, then you need to have computer or cybersecurity or some physical sciences, computers as one of the subjects in your graduation. Next is scientific assistant, physical and general, MSc forensic science, MSc physics with 60%. Here only 60% for the assistant post. Officer post के लिए we had 65%. Here we have 60%. अगर 60% है MSc physics, MSc forensic science के लिए, then you are eligible. You need to have physics, pure physics as one of the subject in your graduation level. Next is 56 scientific assistant for the chemical division, MSc chemistry, MSc forensic science with specialization to chemistry, 60% minimum aggregate होना चाहिए. जो MSc forensic science student है, they need to have chemistry or toxicology as one of the subjects in their graduation level. 57 scientific assistant, biology, serology, MSc with biology, zoology, botany, same as above, just we need to have 60% aggregate marks. And अगर आपने BSc forensic science करी है, MSc forensic science करी है, in that case you need to have pure biology and biological subjects as one of the subject in your graduation. Next is 58 computer assistant computers. Again same, computer science, MSc में computer science, MTech, these subjects or MSc forensic science with computer or cyber security, 60% aggregate eligible है. If you are BSc MSc forensic science, then you need to have some computer subject as a pure computer subject in your graduation level, तब आप eligible हो. Then we have laboratory technician, physical and general. Here we have BSc in physics and BSc in forensic science. We don't need MSc here, but फॉर एग्जाम्पल अगर आप MSc हो तो भी यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट. ठीक है, BSc फोरेंसिक साइंस, BSc फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. BSc फोरेंसिक साइंस में आपको एक प्योर सब्जेक्ट होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स. केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BSc केमिस्ट्री और BSc फोरेंसिक साइंस. इफ यू आर अ BSc फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट, देन केमिस्ट्री एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स. Laboratory technician, biology, serology, BSc biology, zoology, biochemistry, etc., etc. ये सारे के सारे subjects with BSc forensic science. If you are a BSc forensic science student, then biology, zoology, botany as one of your subjects. If you have these subjects as one of the subjects in your graduation, then you will be eligible. Next 62 technical laboratory technician computers. Bachelor की degree in computer or specialized subject BCA from any recognized university, you will be eligible. Laboratory attendant, you must have passed intermediate with MPC or biology, physics, chemistry from any recognized state government institution, then you will be eligible. Okay, here we have some medical standard. We need to have some eye vision. Distant vision के लिए 6/6, राइट आई के लिए 6/6, लेफ्ट आई के लिए, नियर विजन के लिए 0/5 for right eye, 0/5 for left eye. Okay. Okay, really very important point, selection procedure. So here we have 30-70 ratio. So 70% will be awarded by your different qualification studies, or you have to fight a descriptive examination to get selected for 30 marks के लिए होगा. ठीक है, so selection procedure for the post code 51 to 54, usually सभी का selection procedure is just like this. So weightage क्या है, 70% marks will come from your academic qualification and work experience for the post code 51 to 54, मतलब scientific officer वाली post. Here we have, ठीक है, 5 marks comes from the percentage of aggregate of SSC or equivalent qualification. 10 marks from
intermediate or relevant qualification. 15 marks will come from your 3-year graduation program. 25 marks will come from your post graduation MSc program. 10 marks if you have any PhD or MPhil or postdoctoral thing. So 10 marks from here. Okay, if you have MPhil, 5 marks. If you have PhD, 10 marks. ठीक है, if you have any work experience in any form, चाहे वो contract हो, outsourcing हो, regular हो, from FSL or CFSL, 5 marks यहाँ से. If you have any work experience, 3 years, 5 years, 8 years, so 2, 3 and 4 and 5 marks respectively, this will make your total 70% of marks. ठीक है, बच गया 30%. The rest of the 30% will come from the written examination. So 30 marks will come from this. Okay, and yes, and what is the minimum marks you should score for your written examination? ये जो written examination होगा, it is concept based passage writing वाला question answer paper, not MCQ based. So you need to get 40% of written examination in order to qualify the examination. ठीक है, 70% तो है ही है. अगर आपने 40%, if you are unreserved candidate, तो 40% अगर 30 में से 40% स्कोर नहीं करा, तो you will be ineligible. So 30 marks के लिए 40% कितना होगा? Approximately 15 marks. तो इतना तो आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा. Here we have some relaxation, 35% for EWS candidates and OBC and 30% for ST SC candidates. ठीक है, so minimum 30% आपको स्कोर करना है, 35% and 40% respectively for different categories. ठीक है, you have to use blue or black point, blue and black ballpoint pen to answer the questions in your examination. Okay. Yes, यही प्रोसीजर है. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट कोड 55 to 58 साइंटिफिक असिस्टेंट. सिमिलर गोज विद दिस. यहाँ पे 5 मार्क्स SSC इक्विवेलेंट, 10 मार्क्स योर इंटरमीडिएट, 15 मार्क्स 3-year graduation program, 25 marks. Your post graduation, 10 marks for if you are PhD or MPhil. 5 and 10 separation for MPhil and PhD. अगर आपने कहीं काम करा, if you have any work experience, 5 marks, 2, 3, 4 and 5 marks according to the number of years of experience. तो टोटल 70 मार्क्स बनेगा. नेक्स्ट सेम थिंग, 30 मार्क्स के लिए आपको पेपर देना है. इट विल बी क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. यू हैव टू राइट दी आंसर्स जैसे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिखते हो. अगर आपने PhD एनरोल करा हुआ है तो जैसे आपने जो आपका इनिशियल सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं, तो जो आपको जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जिस भी सब्जेक्ट में PhD कर रहे हो उसके पेपर लिखने होते हैं, वैसे ही आपको ये आंसर्स लिखने हैं. अगेन सेम मिनिमम 40% फॉर अदर कैंडिडेट्स, 35% for EWS and 30% for ST SC candidates. Okay. These are the selection procedures. Next important thing is your syllabus. Okay, like questions which will come from this particular syllabus, and one big announcement that we will launch the course for this particular vacancy. You'll get a full-fledged course to prepare for the examination, which will give you 30 marks. Okay. Here are the syllabus. So scientific officer, scientific assistant, physical and general के लिए we have general forensic science unit 1. So here are the topics: forensic science, crime scene management, crime scene evidences. Unit 2 is physics, mechanics of particles, mechanics of rigid bodies, central forces. Fourth unit, general waves and oscillation, simple harmonic motion, different oscillation, vibrating strings, vibrations of bars. Optics, different topics from optics. Thermodynamics, different topics of thermodynamics. Electromagnetism, modern physics, and this is it. This is your syllabus. Next unit, ballistics. ठीक है, ballistics के लिए again history and background of firearms, principles and particles of identification of firearms, ammunition and constructing part, gunshot residues, internal external ballistics, instrument and techniques for ballistic evidence analysis. Next unit is document. ठीक है, general optics and wave optics, different topics from the particular subject. Next, this is it. This is the syllabus. Next, जो scientific officer, scientific assistant, chemical के लिए same syllabus for scientific officer and scientific assistant for the respective divisions. ठीक है, same forensic science, crime scene management, crime scene evidence,
general chemistry, some topics from general chemistry because chemical division है. Next, inorganic chemistry, physical chemistry, thermodynamics, forensic toxicology, narcotics, fuels and explosives and explosion residues. ये सारा का सारा syllabus is for your chemical division. Next, instrumental techniques भी है. I'm so sorry. Instrumental techniques, all the different instrumental techniques comes in this. Spectroscopy के बाद this syllabus is finished. Next syllabus is for biology and serology. General forensics तो general forensics ही रहेगा. Next is life science. Then we have forensic biology, general psychology and physiology. Yes, this is it for biology, serology. Next is for computers. General forensics इसमें भी आएगा. Then we have computers. Okay, network forensics. Next generation internet protocols. Some channels, some computer forensic tools, forensic duplication, terminology and cryptography, forensic audio and video. ठीक है, दिस इज द सिलेबस. नेक्स्ट जो सिलेबस है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, फिजिकल एंड जनरल फोरेंसिक्स के लिए. तो सिलेबस सेम है. जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े इजी होंगे एज कम्पेयर टू साइंटिफिक ऑफिसर एंड असिस्टेंट. सिलेबस इज relatively more or less same. Okay, yes, it is more or less similar to the previous one. Chemistry के लिए you have physical chemistry, organic chemistry, then biology के लिए basics of forensic science, life science, computers के लिए basics of forensic science and computers. Yes, that's it. Okay, for laboratory attendant class 12th level of animal and plant kingdom, heredity and evolution, and environmental sciences. So this is your syllabus. Don't forget to join our course. We will soon launch the course. As soon as you'll get the opening of application form, you'll get the course in our application. So download Diksha's Learning Lab application. इस annexure में आपको अपनी सारे के सारे school certificate, district and duration of study in months आपको लिखना है. This is the resident certificate. This is the medical certificate. यही आपको फॉर्मेट फॉलो करना है टू सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स. बाकी सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फिल करनी है. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. आई होप दिस वेकेंसी will be useful to you. You will get your dream job if this is your dream job, and if you are eligible, this is really very good opportunity. You shouldn't miss this. So download Diksha's Learning Lab application for the preparation of this course, and yes, I will help you out throughout the process, throughout the preparation journey, examination and everything. And I hope if this video is helpful, don't forget to share this video with your friends, like this video, subscribe channel if you haven't. I'll see you all in the next video with another topic or information from the field of forensic science. Till then, take care. Bye bye.